theorem and we are supposed to prove this theorem first, correct? So what is given? Let f from R to R be a non-constant differential function and let k belongs to R be a constant. Uh, Let f of x equal to k describes a curve C having tangent at each of its points. Then the first thing you want to prove, the gradient vector delta f is normal to C. The second, the directional derivative of f is 0 along C. The directional derivative of f has the largest value in the direction normal to C. Okay, so let us see the first theorem, that is gradient vector. इसके पहले हम लोगों ने एक theorem proof किया था जिसमें यही proof किया था हम लोग, gradient vector is normal to C. So if you want to write it, you can write it again. सेम जो भी मतलब ऐसे किया था ना, जी डैश लिया, सेम थिंग. लेट मी डू द फर्स्ट वन. प्रूफ. let the plane curve C is given by, एक पैरामीटराइजेशन देंगे हम लोग, दैट इज r of t इक्वल टू से x of t comma y of t, correct? So say g of t will be in a function. So what is my g of t? It will be f of r of t. फंक्शन में अगर ये पुट किया तो आई विल गेट अ फंक्शन g of t that depends on your t, correct? And the plane curve lies on f of x equal to k दिया था, correct? the plane curve lies on f of xy equal to k. f of xy equal to k, this is a plane. So what do you see now? That means function is constant. That means what? Your g of t is constant. So what is g dash of t? That is 0. But g dash निकालेंगे तो ये क्या आएगा? This is f of rt ना. So it will be f dash of rt. f dash को हम लोग gradient लिखते हैं यहाँ पे, correct? That is del of f of rt into r dash of t, just like chain rule. That is equal to 0. What do you mean by this? This is both the thing are perpendicular to each other because their dot product is 0. That implies what? Delta f is perpendicular to r dash of t. What do you mean by this? That means delta f, huh? That means delta f is r dash, मतलब क्या, ये tangent vector है, so that means delta f is normal to the curve C. करेक्ट. एज आर डैश क्या रहता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट रहता है. सो द फर्स्ट वन इज डन, दैट इज ग्रेडियंट वेक्टर इज नॉर्मल टू सी, दिस इज डन. व्हाट अबाउट द सेकेंड वन? द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इज 0. सेम जो डेरिवेटिव निकाला, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, करेक्ट? एंड लेट अस सी what is your delta f of rt. That is your delta f of rt into r dash of t is already, you know, this is product is 0, correct? So but what do you know, what is delta f of rt? This is directional derivative, correct? I have already told you I can write directional derivative in terms of your gradient vector, even in terms of your total derivative in terms of your gradient vector. So this is so much important. This is what directional derivative of f along the tangent vector c. Correct? That means what? That is delta f into t equal to 0, where t is the tangent vector. T is tangent vector. So that's it. Directional derivative of f, directional derivative of f in direction c is 0. Okay, AB. Get it? What is the next thing? The third thing is the direction derivative in the direction of f has the largest value
इन डायरेक्शन नॉर्मल टू सी। सो पहले लार्जेस्ट वैल्यू कहाँ पे रहेगा वो देखना है अपने को, करेक्ट। सो दैट मीन्स वो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। विच डॉट प्रोडक्ट? पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? द डायरेक्शनल डेरिवेटिव in a direction, say any direction L is given by what? Delta f dot L. This is how directional derivative is defined, correct। and dot product को हम लोग solve कैसे करते हैं? This is mod of delta f into mod L into cos theta. So what do you think, when is this maximum? ये मैक्सिमम क्या रहेगा? जब ये cos theta का मैक्सिमम वैल्यू है, एंड cos theta का मैक्सिमम वैल्यू कब रहेगा? Where theta is angle between delta f and L. So the right hand side is maximum, ये दोनों तो constant है, it is maximum only you are having maximum value of cos theta. So maximum value of cos theta कब आता है? जब theta का 0 होता है। The value is maximum when cos theta is maximum. Cos theta is maximum. That means theta is 0. Correct? Theta is 0 मतलब क्या? कोई एंगल ही नहीं, मतलब in the same direction. That means what? In the direction of L. Direction of L must be same as delta f. Correct? So what can you say now? Thus the directional derivative of f at a point on the curve is maximum कौन से डायरेक्शन में? Maximum in the direction of delta f. delta f की सीम रहेगा तभी। But what do you know about delta f from 1? Delta f is normal to C from 1. Hence what can you say? Directional derivative of f is maximum in the direction normal to C. Correct? जो प्रूफ करना था तुमको, you need to prove this thing. That is directional derivative of f has the largest value in the direction normal to C. और normal to C मतलब क्या? Delta f is the direction which is normal to C. Correct? Yeah. So now ठीक है, अभी तक we are talking about tangent. Now let us actually see कि ये tangent का equation निकाल कैसे कर सकते हैं? How can we find the equation of tangent? That is the most important thing. And let us see how to get the equation of normal also. एक curve दिया है and you want to find equation of tangent. Tangent actually t should be capital. Okay. So basically you need to understand one thing. If n that is equal to n1, n2, n3 is a normal vector to a plane passing through E, that is E एक point लिया मैंने, E1, E2, E3 that belongs to R3, then the equation of plane by 12th standard you already know equation of plane क्या रहेगा। normal vector तुमको पता है passing through this point, so what is the equation of plane? That is n into x minus e, that is equal to 0. Correct? What do you mean by that? That means n1, n2, n3
and x minus e मतलब dot product with x minus e1 x then y minus e2 and z minus e3. If you remember equation of plane का formula 12 standard, correct? Now what do we want to find? We want to find tangent vector. Tangent vector निकालना है, तो ये n1 n2 n3 क्या रहना चाहिए? To find tangent plane of level surface say LK at E, we consider a family of curves as level surface passing through E. Crossing through A. But by the previous theorem, what do we know? That is tangent vector is perpendicular to whom? By previous theorem or by previous, whatever you say, the tangent vector to all this level curve curves are perpendicular to delta f of A. Correct? So what do you mean by that? That means delta f of A क्या रहेगा? Is normal to tangent plane. Now if this is normal to tangent plane, तो ये मेरा normal vector हो गया. That means मेरा जो n1 n2 n3 है, that is now my delta f of A. And you know what is that? fx at E, fy at A, fz at. So equation of tangent क्या रहेगा? Equation of tangent plane is, what is equation of tangent plane? And that will be your fx at A, comma fy at A, comma fz at A, dot product with whom? X minus e1, y minus e2, z minus e3 equal to 0. So this is your equation. अभी सॉल्व करना है तो क्या रहेगा ये? fx at E multiply by x minus e1 plus fy at E multiply by y minus e2 plus fz at E multiply by z minus e3, that is equal to 0. So this is a formula to calculate your equation of tangent. Correct? So you just need to consider one thing, जो normal vector रहेगा तुम्हारा वो delta f is a normal vector for me for the equation of tangent. Correct? And equation of normal के लिए क्या रहेगा? Remark, equation of normal to the level surface. See वो perpendicular है, मतलब ये क्या रहेगा? Normal to the level surface f of x y z, that is equal to k at the point E, that is E1 E2 E3 is given by, okay, वो अगर परपेंडिकुलर तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा. तो पैरेलल है मतलब क्या? उनका रेशियो सेम होता है. दैट इज x माइनस e1 अपॉन एफ एक्स एट ई, दैट विल बी सेम एज y माइनस e2 अपॉन एफ वाई एट ई, that is equal to z minus e3 upon fz at e. So this is the formula which gives you normal vector. यहाँ से normal vector मिल जाएगा और यहाँ से tangent का equation मिल जाएगा, equation of tangent. Correct? So we are having both the formula now.
Let us do some problems. इसमें equation of plane is given and you need to find normal vector and this thing. इवन चेन रूल पे भी मैंने क्वेश्चन ही सॉल्व किया ना. डिड आई सॉल्व क्वेश्चन ऑन दैट? हम लोगों ने प्रूफ देखा था बट क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया. तो पहले उस पर एक क्वेश्चन करते हैं. दैट इज फाइंड द डेरिवेटिव of z with respect to t if z equal to 3 x square 3 ऐसे x cube y plus 4y cube and where x is in terms of sin phi t, y is cos phi t, then what you have to find derivative of z, that is you want to find dou z by dou t, correct? Sorry, derivative, let us not write dou. Yeah, you want to calculate dz by dt where say t equal to pi by 2 एक मैंने वैल्यू दे दिया. Okay, now try to see, you want to calculate dz by dt. Yes, think about it. And your z is in terms of 3 variable x y, in terms of 2 variable x and y. So मतलब क्या करना पड़ेगा? चेन रूल क्या बोलता है? तुम z को विथ रिस्पेक्ट टू x है तो x ही कर लो, दैट इज dx कर लो एंड मल्टीप्लाई बाय dx बाई dt कर लो, ऐसा. करेक्ट. सेम z है, इसको विथ रिस्पेक्ट टू y कर लो, दैट इज यहाँ पे डू y एक्चुअली डो z बाय डो y कर लो, मल्टीप्लाई बाय डो y बाय dt और dy बाय dt, वट एवर यू राइट. इधर डो लिखो या डी लिखो, दैट इज ओके बिकॉज ये एक ही वेरिएबल में है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. सो दिस वाज योर चेन रूल. ये क्या बोलता था? डॉट प्रोडक्ट है किसका? ग्रेडियंट वेक्टर का. डो z बाय डो x कॉमा डो z बाय डो y डॉट प्रोडक्ट विथ डो x बाय डो t कॉमा डो y बाय डो t. करेक्ट. दिस इज द सेम थिंग. सो अभी क्या करना है? जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट डो z बाय डो x. कैलकुलेट करते हैं. सो डो z बाय डो x मतलब z क्या है? योर फंक्शन. सो z की जगह पे f भी लिख सकते हो. विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो ये क्या आएगा? 9x स्क्वायर y एंड दैट्स इट. मल्टीप्लाई बाय x को विथ रिस्पेक्ट टू t किया तो साइन फाई टी इट विल बी 5 टाइम्स कॉस फाई टी. करेक्ट. एंड वन मोर थिंग, तुम लोग को t दिया है तो x एंड y का वैल्यू बाय पुटिंग t यू कैन गेट. पाई बाय 2 है तो यू कैन गेट दैट. एंड मल्टीप्लाई बाय dx बाय dt हो गया ना. एंड प्लस द नेक्स्ट गाय इज डो z बाय डो y. विथ रिस्पेक्ट टू y किया तो 3x क्यूब प्लस 12y स्क्वायर 3x क्यूब या प्लस 12y स्क्वायर ये हो गया. एंड दिस गाय इज मल्टीप्लाइड विथ होम डो y बाय डो टी. कॉस का डेरिवेटिव साइन, दैट इज दिस विल बी माइनस फाई साइन फाई टी. करेक्ट. ये हो गया. एंड नाउ पुट द वैल्यू t इक्वल टू 4 पाई बाय 2 दिया है तो यहाँ पे साइन फाई पाई बाय 2 निकालो, कॉस फाई पाई बाय 2 निकालो. एंड या व्हाट इज साइन फाई टी? दैट इज साइन फाई पाई बाय 2, दैट इज -1 बिकॉज ऑड मल्टीपल है. एंड कॉस फाई टी दैट मीन्स कॉस फाई पाई बाय 2, ये भी ऑड मल्टीपल है तो ये 0. सो लेट अस पुट इट. मतलब जो तुम्हारा x का वैल्यू है वो तुमको पुट करना है -1 एंड y का वैल्यू पुट करना है 0. सो लेट अस सी, जहाँ पे भी कॉस है यहाँ पे गया 0. सो यहाँ पे x है गया -1, ये गया 0. सो इट इज़ 3 -3 हो जाएगा. एंड यहाँ पे साइन फाई टी ना, सो दैट इज़ 5 हो जाएगा, माइनस एंड माइनस. सो आंसर विल बी -3 into 5. So this will be
I'll write here. So that is equal to minus 3 into 5, that is minus 15 is the correct answer. So this is the chain rule, correct? Yeah. Now let us see a problem to calculate the tangent. Find the equation of tangent plane and normal line to the surface. Z equal to 9x square plus y square plus 6x minus 3y plus 5 at 1 2 3 at this point, correct? You want to calculate the equation of tangent at this point. Okay, so how should you start with? That is the first question, correct? So फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ नॉट टेंजेंट के लिए वी नीड एफ, और एफ के लिए मुझे क्या चाहिए? एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो. सो क्या करने का? ये जेड को भी उस साइड भेजने का. दैट मीन्स डिफाइन एफ ऑफ एक्स वाई जेड एज लाइक दिस: 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3y प्लस 5, और जेड को भी मैंने उधर भेज दिया माइनस जेड. सो दैट इज माई फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज ज़ीरो. f of x y z is 0. Now this is a level curve because right hand side में constant होना चाहिए. Now this is a level curve for me. So let us start now. क्या क्या चाहिए? पहले डेल चाहिए तो fx निकाल लो, डो एफ बाई डो एक्स निकालो. क्या आएगा? दैट इज 18x 18x plus 6 ना. And what is next? fy do f by do y. Do f by do y will be 2y minus 3. Do f by do z, that is minus 1. So ये मिल गया एफ एक्स एफ वाई एफ जेड मिल गया, बट कौन से पॉइंट पे चाहिए था? 1 2 3. सो लेट अस पुट द पॉइंट, that is do f by do x at 1 2 3, do f by do y at 1 2 3. फर्स्ट ग्रेडियंट वेक्टर निकाल लेने का, that will make the work easy. So यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट किया तो ये 18 प्लस 6 आ जाएगा. So it is 24. यहाँ पे पुट किया तो it will be 4 3, it will be 1, and यहाँ पे it will be minus 1 as it is, correct? So एफ एक्स एफ वाई एफ जेड मिल गया, मतलब तुम्हारा ग्रेडियंट वेक्टर मिल गया. नाउ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? यू नो द फॉर्मूला. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज एफ एक्स एट दैट पॉइंट मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1, जो भी पॉइंट एक्स माइनस 1 प्लस एफ वाई मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस 2 प्लस एफ जेड मल्टीप्लाई बाय जेड माइनस 3, दैट इज इक्वल टू, डू यू सी पॉइंट क्या था? 1 2 3. So x minus 1, y minus 2, z minus 3, fx, fy, z, fz. This is dot product of gradient with this plane. So अभी fx, fy सबका वैल्यू पुट कर दो and you will get the equation. So fx का वैल्यू क्या है? That is 24x minus 1 plus 1 into y minus 2 minus 1 into z minus 3 equal to 0. यही है ना? 24 1 minus 1. 24 1 minus 1, correct. Now you solve this, you'll be having what? 24x minus 24 plus y minus 2 minus z plus 3 equal to 0. So यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको? you'll be having 24x plus y minus z, 24 minus 2, this will be minus 26, 3 minus 26, that is minus 23. Minus 23 equal to 0. You can keep that side, that. So you can write like this: 24x plus y minus z equal to 23.
Do you see? This is a plane. This is called tangent plane. So equation of tangent plane ये हो गया, tangent plane. What about equation of normal line? Formula क्या है? Equation of normal line. What is the formula? That is parallel होता है ना, parallel मतलब ratio same. X minus 1 upon fx, that is y minus 2 upon fy, that is z minus 3 upon fz, correct? So this is x minus 1 upon fx क्या था? Minus 24. No, sorry, it was 24. 24 1 and minus 1 ना, y minus 2 upon 1, z minus 3 upon minus 1. So this is your equation of plane. अगर चाहिए तो इसको तुम in terms of की भी लिख सकते हो, इक्वल टू की करके, और जस्ट ऐसा रखा तभी भी चलेगा. This is another way to represent your equation of line in 3 variables. So this is your equation of normal line. Observe one thing, this is line, this is plane. Okay, so that is quite simple. So I hope we can do more questions on this. Let me do one more problem. See, in this case the level surface was not given. So हम लोगों ने क्या किया, इसको level surface बनाया. This is my level surface now. In some question level surface may be given f of equal to something. This may be given. But constant रहता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता इतना. Say if f of x y equal to say x square minus y square, find the gradient vector find the gradient or find the normal vector at that point, find the tangent. Yeah, see इसी केस में R2 है ना, तो it will be tangent line. Find the tangent line at 4,1 to the level surface f of xy that is equal to 15. लेवल प्लेन ही बोलना चाहिए था इधर भी. एट द पॉइंट 4,1. सो ये पॉइंट है, ये एफ एक्स है, करेक्ट है. सो पहले डेल एफ निकालते हैं. डेल एफ क्या रहेगा तुम्हारा, इट विल बी 2x माइनस 2y. कौन से पॉइंट पे, 4,1. सो डेल एफ एट 4,1 क्या रहेगा ये. दैट मीन्स अगर डेल एफ अच्छा नहीं लग रहा तो ये मैं राइट डो एफ बाई डो एक्स एट 4,1 डो एफ बाई डो वाई एट 4,1. So what is this 4, that is 8 minus 2, एंड यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी should be just 8 ना. This is 8 and this is minus 2. So del f मिल गया मुझे. अभी क्या करना है, what is my function they are saying f of xy equal to 15. This is my level surface, correct. So the equation is x square minus y square equal to 15, whether it lies in the surface. Yeah, it satisfies the equation, that is 4 and 1. If you put it in the equation it satisfies, so that is okay. So how do you find fx, x minus 4 plus fy and क्या था, y minus 1 that is equal to 0. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया. एफ एक्स कितना है तुम्हारा, 8 and minus 2. सो दिस इज 8 into x minus 4 minus 2 into y minus 1, that is 0. So that will give a straight line का equation, that is 4. So it will be 8x और 2 से डिवाइड कर लेते तो 4x हो जाएगा and it will be minus y or it will be 15. So I'll write is equal to 15.
So this is your equation of tangent. Correct? Yeah. Yes. Let us do one more problem if we have some time. We have. Find the points. Find the points on the ellipsoid. Ellipsoid. What is the ellipsoid? X square plus 2y square plus 3z square, that is equal to 1, where the tangent plane is parallel to the plane 3x minus y plus 3z equal to 1. See, अभी parallel दिया है and you want to calculate the points here. Correct? So पहले del of f of x निकाल लो. Del f at x naught, y naught, z naught. अगर ये निकाला तो ये क्या आएगा? It will be 2x naught and it will be 4y naught and it will be 6z naught. ये हो गया del f. So del f is a vector perpendicular to the tangent plane. So this is perpendicular to tangent plane, and what do we know? The tangent plane is parallel, and this tangent plane is parallel to a vector, parallel to a plane जिसका वैल्यू दिया है parallel to 3x minus y plus 3z equal to 1. So इसका normal vector क्या आएगा? Whose normal vector is just coefficient of x, y, z. Whose normal vector is 3 minus 1 and 3. Correct? This is parallel normal vector of that. Thus, so ये normal vector है. So what will you get? तो parallel हो जाएगा इससे parallel because normal vector है ना. That means what? Thus 2x naught, 4y naught and 6z naught is parallel to your normal vector, to your vector 3 minus 1 3. Parallel है मतलब क्या? They will be in some ratio. You may write like this, that is 2x naught, 4y naught, 6z naught, that is equal to some alpha multiple of 3 minus 1 3. So what do you mean by that? That means 2x naught equal to 3 alpha, 4y naught equal to minus 1, 6z naught equal to 3. So x naught equal to 3 by 2 alpha and y naught equal to minus 1 by 4 and z naught equal to 1 by 2. So ये मिल गया. And you know one more thing कि ये x naught, y naught, z naught lie on the ellipsoid, correct? X naught, y naught, z naught lies on the ellipsoid. What is the ellipsoid? That is x square plus 2y square plus 3z square equal to 1. So इसमें put कर लो and you will get the value of alpha. और अगर थोड़ा सा सॉल्व करना है ना तो ये देखो, दिस इज 3 by 2 अल्फा minus 1 by 4 minus 1 by 4 minus alpha by 4 है. And next is this is 1 by 2. Since it is a vector, इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर लूँ 4 से तभी भी चलेगा ये, that is not a issue.
So अगर force is this is equivalent to this guy, तो 3 अल्फा एंड यहाँ पे क्या आएगा माइनस अल्फा आएगा एंड यहाँ पे क्या आएगा 2 अल्फा. This is alpha. So you just put this value 3 alpha minus alpha and 2 alpha and get the value of alpha from here. Correct? And that alpha there will be 2 alpha plus minus आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर टर्म है. x square 2y square 3z square equal to 1 में पुट करोगे तो it will be alpha square outside and it will be 9 plus 1 plus 4. Oh, now it will be 2, it will 4 these are 12, that is equal to 1. So alpha square multiply with it will be that is 25 no 20 यार 23. So alpha square equal to 1 upon 23, alpha equal to plus minus 1 upon root of 23. So 2 points you are having, just put the points here, you will get the answer. Hey wait यार, this was something x square ना, सिर्फ x square नहीं था, it was something. हाँ ठीक, x square plus 2y square plus 3z. हाँ, so x square is this, that is 9 and y is 1, so plus 2 and 3 into z square 12. So यार this is 23. perfect. ठीक है. So this is your alpha, so the points will be what, alpha का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 2 पॉइंट मिलेगा, एक में प्लस पुट करना है, एक में माइनस पुट करना है. So these are the 2 points that the जिस पे तुम्हारा पैरेलल है, that is plane, parallel to the plane. Okay. एंड अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो del f, which I already told you, in which direction it will be maximum value, in the direction of del f. Okay, then I'll stop.